Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Testbook Super Coaching. I hope all of you are preparing really well और I hope आप लोगों ने announcement भी देख ली होगी. Obviously now we've got a deadline, a date to make sure that we are meeting our targets. There's no need to panic, there's no need to worry. I will be making one or two shots also to tell you that how you need to make sure that you're very calm and composed at this particular juncture. क्योंकि ये पूरा एक मेंटल गेम है अगर आप इस टाइम पे काम रहेंगे रिविजन करेंगे इफ यू वर्क वेरी हार्ड प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग व्हाटएवर you've done that's the most important pro tip and in case if you haven't really studied so well that's perfectly all right आप जितना ज्यादा हो सके questions को practice कीजिएगा rather I also have a couple of announcements to be made for all of you that how we'll be aiding your preparation journey will be helping you in your overall preparation. I will be talking more in detail about that also with all of you. Okay. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, Satendra, Pal, Sonali, Kasturi, Shweta Padma, Dominator. I'm doing good. Thanks so much for asking. Angan, good evening. Good evening. Future Dreams, good evening. Okay, good evening, everybody. So, jaldi se let's. Okay, Isabella is asking how to join the Score Booster batch. I think you can reach out to the team. They'll help you out. Isabella, they will be able to help you out with that. But all the details are actually there on the website. Our website pe jaake also you can make sure that you take a tour of the Score Booster batch. Okay. All right. Without further ado, let's just very quickly get started. jaldi se आज की session को start करते हैं. I have a couple of announcements to be made next week. Literally, हम Monday to not only Friday, but on Monday or Saturday, Sunday भी we will be practicing a lot of these questions for all of you. So make sure कि आप prepare हो रहे हैं Monday onwards, 21st November onwards. We will make sure that every day जो आपका net का countdown है, so roughly if you're able to see say 9 odd days plus another you can add another 5 days क्योंकि sixth day तो count नहीं करते हैं. So we've got 15 days. I think we'll be able to practice over 1500 questions. So I think you will be in a good shape altogether. Good evening, Ethereal. Good evening, Shabnam. Good evening, Zamar. So good to see you. Um, Yes, yes, yes. नहीं सोनाली दुखद समाचार नहीं है दुखद समाचार नहीं है इट्स अ गुड न्यूज कि यू गॉट अ डेडलाइन एंड अ डेट सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग क्योंकि अब डेडलाइन नहीं होती है डेट नहीं होता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से प्रेपरेशन स्टार्ट करें हम लोग ऑफ कोर्स एवरी डे आई थिंक इट वाज वेरी फुली ब्यूटिफुली टाइम्ड क्योंकि ये जो स्कोर बूस्टर बैच है टेक्निकली इट्स गोना बी द लास्ट डेट ऑफ द स्कोर बूस्टर बैच विल बी around the 5th and 6th of December. So we are ending on, ending on a very correct note altogether, as they say, like, the prediction falls completely true so that all of you are able to complete it. Okay. Aapki concept classes, of course, 8 p.m. chalti hai, 9:30 p.m. you got your questions classes and 10:30 p.m. Monday to Friday we meet on the YouTube platform. Okay. जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक विल बी बुकर अवार्ड्स एक if you're not preparing for the December cycle and if you're preparing for the next cycle after December तो आप अपने schedule के अंदर एक Booker Award winning book every day आप पढ़ें और एक important work of the day पढ़ें and ये routine हम लोग भी we will be getting started with all of you every day we'll practice one work ताकि अच्छी तरह से आपकी strong पकड़ बने उसके ऊपर so Booker Award winning writers is the main focus for today's session. जल्दी से start करते हैं. आपकी polls भी will be starting shortly. Your polls are also going to be shared very very shortly. In the meantime, I'll be starting the poll tomorrow on English Literature Hustlers. Your Telegram channel ताकि आप at least every day you're practicing questions with us. So please make a note of it and don't forget to join. अच्छा यही announcement मुझे आपकी करनी थी to assist you all. We will be having regular. We will be having your डेली मैराथन अब आपके डेली मैराथन स्टार्ट हो जाएंगे 10:30 p.m. पे सो ऑन यूट्यूब वी विल बी मीटिंग एंड हमारा टारगेट क्या है आवर टारगेट इज वेरी क्लियर वी विल वाया दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म उतना ज्यादा ही हो जाएंगे बट कम से कम आपके 1500 कॉन्सेप्ट्स में रिवाइज करवाऊंगी on this particular platform. So Monday, up to now, Saturday, Sunday देखेंगे. So we're going to be meeting regularly. So please ensure कीजिएगा that all of you are also regular because जितना ज़्यादा आप regular होंगे. Good evening Suprita, good evening Monica, good evening Ravi. जितना ज़्यादा आप regular होंगे उतना ही better रहेगा. ठीक है उतना ही better रहेगा. So it's always a good idea to make sure that all of you are being totally regular.
मंडे से आपका schedule 21st November, 21st November is when your schedule will be starting. ठीक है, please make sure that all of you are up to speed, all of you are ready to crack it with us. चलिए कुछ आइस ब्रेकर क्वेश्चंस हैं आपके लिए आज के लिए, then we'll come on to the topic for today जल्दी से. Tribute to Papa is a book of poems written by, किसने लिखा है Tribute to Papa? Tribute to Papa is a work written by, किसने लिखा है? Who's the writer who's written Tribute to Papa? तो ये जो वर्क है आपका Tribute to Papa, this particular work is written by which writer? ये वर्क किसने लिखा है? Tribute to Papa is a book of poems written by, ये किसने लिखा है? 1970 में आया था. Good evening, Devashish. Good evening. I'm waiting for the right answer to come in. 1970 में ये आपका वर्क आया था. Monica, आप I don't know this platform. You can actually make sure कि आप raise कर रहे हैं because I've never seen you in the live class also, बच्चे. Okay. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. कल्याणी का सही जवाब आ गया, हर्ष का सही जवाब आ गया, कस्तूरी, देवांशी, प्रीति, मोनिका, एवरीबडी इज गिवन द राइट आंसर. दैट इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर. ममता कालिया, राइट, ममता कालिया इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. ये कब आ रहा है ट्रिब्यूट टू पापा? दिस इज कमिंग इन 1970 एंड यू आर एबल टू सी दैट इस तरह के वर्क्स, या आपके लास्ट पेपर में भी दिसंबर 2022 के अटेम्प्ट में भी पूछा गया था ट्रिब्यूट टू पापा. Which of the following poems is not written by Sylvia Plath? तो सिल्विया प्लैथ ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है? कल भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, रिमेम्बर, कॉमेडिया डिलाटे, पिकरिस्क नॉवेल, कन्फेशनल पोएट्री. तो कन्फेशनल पोएट्री के अंदर प्लैथ really plays a very pivotal role. So quickly tell us what is the right answer over here, which is not written by Plath. Plath, the American poet, of course known for Daddy, known for Lady Lazarus, right? तो इनमें से कौन सा work she has not written? Which is the work that she's not written? Very good. To Ariel is the right answer. To Ariel is the right answer. Lady Lazarus, Daddy, all of these are works that are coming from Plath's account. Confessional poetry का एक बहुत ही important leader है. Robert Burns was born in. Robert Burns was born in. Where was Robert Burns born in? He was born in Alloway, Ayrshire. Where is Ayrshire? He was born in Alloway in Ayrshire. Where is Ayrshire? Where are you able to see Ayrshire? ये कहाँ पर born हुए थे? He was born in Alloway. Right? He was born in Alloway in Ayrshire. So where is Ayrshire that we're talking about? Very good, very good, very good attempt. पहले वाला सबने सही दे दिया है. I think Divyashi का answer आ गया है. Divyashi has written one. That is absolutely right. So when we are talking about your Ayrshire, where is Ayrshire? Ayrshire is in Scotland. Ayrshire is in Scotland. So Robert Burns is actually the national poet of Scotland altogether. That is what you have to remember. And Burns was also known as a pioneering writer of the Romantic movement. The Romantic movement bhi hai, that is also a place where we are able to see that Burns plays a very critical role. One of the most well-known works that he's written, a red rose. Remember, a red rose Burns ka likha gaya hai. So you can keep that in mind altogether. Tam O'Shanter भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है. So Red Rose, Tam O'Shanter, these are all works that are coming from the pen of Robert Burns. ठीक है, तो ये प्लीज आप याद रखना. ये प्लीज आप याद रखना altogether. Okay, so please keep that in mind. मनीषा, इट इज देयर. अच्छा, वो 8 o'clock at 9:30 p.m. की क्लास आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप, व्हेन यू गो टू वेबसाइट you'll be able to find it over there क्योंकि it's a part of the crash course, the score booster batch as it's called. ठीक है, that is the reason आपको वो शायद नहीं मिलती है. Okay, the theological treatise ecclesiastical polity was written by. ecclesiastical polity ये किसने लिखा था? Who's the one who's written on, ये पूरा का पूरा वर्क है ऑफ लॉज ऑफ ecclesiastical polity. ये किसने लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट. ये नॉन फिक्शन प्रोज राइटर आपके एलिजाबेथियन एज में आ रहे हैं. सो इवन इफ यू हैव रेड योर विलियम जे लॉन्ग प्रॉपर्ली, यू विल एक्चुअली बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो करेक्टली. सो यहाँ पर व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट बिकम्स द राइट आंसर ओवर हियर? थियोलॉजिकल ट्रीटाइज ecclesiastical polity. What becomes the right answer over here? Monica,
नोट्स तो आपको बच्चे जैसे ही आप बाहर निकलते हो पीडीएफ होता है और पीडीएफ के अंदर ही मैंने मार्क भी कर रखा है, तो आपको बस डाउनलोड करना है, ठीक है, आपको बस डाउनलोड। वेरी गुड, रिचर्ड हुकर इज द राइट आंसर। रिचर्ड हुकर इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर, ठीक है। रिचर्ड हुकर इज द राइट आंसर। व्हाट आर यू एबल टू सी? यू आर एबल टू सी दैट ecclesiastical polity, so of the laws of ecclesiastical polity, of the laws of ecclesiastical polity, ये किसने लिखा है? रिचर्ड हुकर ने लिखा है। आप अब एक बार नॉन फिक्शनल प्रोज राइटिंग्स को रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, क्लासरूम स्टूडेंट्स, कल मैं जब 9:30 पीएम पे वो क्वेश्चंस करवा रही थी आपको, वन लाइनर क्वेश्चंस, क्योंकि कल हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टॉपिक था आपके क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर। तो कल जब मैं आपको ये करवा रही थी, आई हैड टोल्ड यू अबाउट कंप्लीट एंगलर, और देखिए 2022 के दिसंबर अटेम्प्ट में यही क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो वन लाइनर क्वेश्चंस भी आज और कल जो हम लोगों ने किए हैं एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसको भी आप अच्छी तरह से कवर कीजिएगा। ओके, हु रोट द पॉपुलर इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर फिशरमैन टाइटल्ड द कंप्लीट एंगलर और कंटेम्पलेटिव मैन्स रिक्रिएशनल? तो ये किसने, who's the writer who's written this particular work? Very good, very good, very good, absolutely right देवशीष, absolutely right। बिल्कुल सही, रवि पांडे, क्वीन, सोनाली, हर्ष, देवश्री, everybody is giving the right answer। आइजैक वॉल्टन is the right answer। 1653 में ये वर्क आ रहा है, और ये कौन लिख रहा है? ये आइजैक वॉल्टन लिख रहे हैं। ये कौन लिख रहा है? ये आइजैक वॉल्टन लिख रहे हैं। 1653 में ये वर्क आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आप नॉन फिक्शनल प्रोज, आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, आप प्रमोद के नायर फॉलो कर रहे हो, आप विलियम जेलोंग फॉलो कर रहे हो, आप ओरियन बैक्सटोन फॉलो कर रहे हो, उसके स्टिक ऑन टैग्स लगा के एक बार सारे एजेस के नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर्स अच्छी तरह से देख लेना। इनमें से 5 से 6 क्वेश्चंस आने लग गए हैं आजकल, 3-4 तो आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली डायरेक्टली दिखेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द राइट आंसर हियर? What did Matthew Arnold imply by the term Hebrewism in his Culture and Anarchy? Hebrewism का क्या मतलब था? What was Hebrewism meaning? Culture and Anarchy कब publish हो रहा है? 1869 में publish हो रहा है। When is it getting published? It's getting published in 1869। Hebrewism से उनका क्या मतलब है? What does he mean by Hebrewism? Moral education, absolutely right, absolutely right, right? Hellenism and Hebrewism, Hellenism and Hebrewism आपका आता है, and that is what you're able to see that Matthew Arnold talks about, and we are able to see that Matthew Arnold जो है, the word Hebrewism that comes in, that is actually trying to tell you about that moral education part. Or he was the first critic after Aristotle who tried to define the broad contours of criticism. Therefore, he's called critics critic. तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, okay? Moving on to the next question. The journal Scrutiny was founded in 1932 by कौन, किसने? Who had started Scrutiny? So Scrutiny कौन start कर रहा है? Who is actually trying to talk about? ये किसमें आता है? अच्छा, अब ये देखो, ये आपका moral criticism में आता है, और कल जो मैंने आपको सारा सुन करवाया था, जो मैंने इंग्लिश लिटरेचर हसलर्स टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी दिया है, तो उसके अंदर मॉरल क्रिटिसिज्म, आप जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके, तो आपका मॉरल क्रिटिसिज्म भी हो रखा है उसमें, राइट? सो मॉरल क्रिटिसिज्म में ये पर्सन आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, डोमिनेटर, कस्तूरी, अभिलाषा, फाइज, हर्ष, वेरी गुड, हर्ष देसाई इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। ये सब आई होप यू आर टारगेटिंग अ जेआरएफ। एफआर लीवाइस, और ये किसका पार्ट हो जाता है? दिस इज अ पार्ट ऑफ, आप एक तरह से कह सकते हैं, मॉरल क्रिटिसिज्म। इवन ऑगस्टिन एज में वो क्या कह रहे थे? To make sure that you live in wit with morality and morality with wit. So morality has played a very critical role, right? Morality has played a very, very critical role. That is what you're able to see. So journal scrutiny जो है, it was founded in 1942, and we are able to see that that F.R. Levi's plays a very important role, right? F.R. Levi's plays a very critical role over here. तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उनकी वाइफ कौन थी? क्यूडी रॉथ। So his wife also Curie Roth. I don't know how many of you have actually written that. So scrutiny was actually founded. तो ins and outs आपको इसके पता होने चाहिए। Who among the following theorists has written on narrative empathy? Narrative empathy के बारे में किसने लिखा है? Who has written about narrative empathy? Narrative empathy के बारे में किसने लिखा है? Who's the one who's written about it? Who is the one who's written about it? So narrative empathy also is something that you're able to see. Who's the writer? एक जो writer work लिख रहे होते हैं, it's just not a story that they're conveying. They're also trying to associate themselves with certain fundamental rules that they should be aware about. So narrative sympathy ये जो है, what are you able to see? What are you able to see? Narrative sympathy. Who among the following theorists has written on narrative empathy? Beg your pardon.
एब्सोल्युटली राइट मैं टू आई थिंक दो तीन लोगों ने दिया है। सारा अहमद नहीं है, सुजैन कीन है। ओके, सारा अहमद नहीं है, सुजैन कीन है, सुजैन कीन है, प्लीज इसको याद रखिएगा। नैरेटिव एम्पैथी का जो पार्ट है उसको कौन दे रहा है, सुजैन कीन दे रही है। इन्होंने लिखा भी था पोएटिक स्टूडियन स्टाइल, इज टॉकिंग अबाउट एम्पैथी एंड द नॉवेल ऑल टुगेदर, सो कीन इज द वन हु इज टॉकिंग अबाउट इट। Who among the following first framed a theory of general hermeneutics? अब देखो कल आई थिंक गोकुल ने पूछा था क्वेश्चन कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर सेम आते हैं कि नहीं। सेम क्वेश्चन दो बार आपका नेट में आ गया है, एक बार मैच द फॉलोइंग में आ गया है और अब उन्होंने घुमा फिरा के क्या पूछा है, फर्स्ट। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे करते हैं यू विल बी एबल टू सी कि आपकी पकड़ स्ट्रॉन्ग बन जाती है, यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस बेटर। Who's the right answer over here? What is the right answer over here? Let's see how many of you are able to get the right answer here. इसका क्या सही जवाब हो जाता है? Devanshi Gupta has given the right answer. Devanshi Gupta has given the right answer. So when we are talking about the German person, you are able to see that Schleiermacher is the person. Frederick Schleiermacher is the person who's associated. आप इसमें elimination method भी apply कर सकते थे. Hermeneutics was a way of meaning making. तो थोड़ा सा अगर आप elimination भी use करते, you could have actually made a better choice. Frederick Schleiermacher is the person. I think अभी एक दो दिन पहले YouTube class पे only we had talked about this, right? So please keep that in mind. Who among the following distinguished constative from the performatives? तो आपका जो constatives and performative है, who's the person who actually differentiated? Who's the one who differentiated? When you are looking at thought altogether, who's the person who actually did that? ये काफी easy question है. Who's the person who actually did that? Devanshi, this is from 2022 paper, बच्चे. Fine. This question that we're looking at is 2022 paper. So imagine आपने 2020 का पेपर करा है और उसमें भी same question आया. That is what we are saying. Questions are largely similar. Largely similar is what we are saying. What is the correct answer over here? Let's see how many of you get that right. This is John. Oh yeah, Devashish has got it right. Devashish has got it right. John Austin is the right answer. Devashish got it right, absolutely correct. John Austin is definitely the right answer. Who among the following coined the phrase soft capitalism? Who coined the phrase soft capitalism? किसने coin किया था the phrase soft capitalism? So when we are talking about soft capitalism, who's the person who's associated with soft capitalism? So when we are talking about capitalism ka spread altogether, it's not anymore hard, but it's very softer. We want to make a career. You're studying right now, and at the heart of it, when you will succeed in your exam, what will happen? As a result, you will get a job. You'll be able to again be a part of the capitalistic society. You'll be able to generate revenue. You will be able to again become a victim of soft capitalism altogether. जल्दी बताइए, what is the right answer over here? What is the right answer over here? Soft capitalism. Nigel Thrift, very good. Gunjan has got the right answer. Devashish has got the right answer. Abhilasha has got the right answer. Nigel Thrift is absolutely the correct answer. Nigel Thrift is the right answer over here. अच्छा, similarly thick description किससे associated है? When we are looking at thick description is associated with whom? With whom is this word thick description attributed? Thick description किससे attributed है? थिक डिस्क्रिप्शन जो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स में आता है 1973 इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स. द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स में आता है. सो हु इज एसोसिएटेड विद इट? द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स. द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स. So what is the right answer here? What is the right answer over here? Clifford Geertz is absolutely the right answer. So thick description is Clifford Geertz. Nigel Thrift is the answer for soft capitalism. Okay. So again, keep on reviewing. Austin is the one who's actually trying to tell you about both constantive and performatives. Okay. So don't go wrong. Hermeneutics में कैसे आ रहे हैं? So just make a mind map, and these kind of questions you will have to review them again and again. According to Stuart Hall, the concept played, the concept of a played so basically just Stuart Hall hai, he is actually I'm just telling you. So according to Stuart Hall, the concept of played a seminal role in cultural studies, or which concept played a very important role in cultural studies. Cultural studies में concept था, right? कल्चर डोमिनेंट कैसे होता है, पॉपुलर कल्चर कैसे आता है, बिकॉज वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट, राइट? बिकॉज वी कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट. तो कैसे होता है, हाउ इज इट दैट वी आर एबल टू सी? यस एवरीवन.
Perfect, perfect. Absolutely right. Absolutely correct. Absolutely correct. So यहाँ पर what are you able to see? You are able to see that hegemony का जो concept है, right? Hegemony which means control. Hegemony which means control. That is an important concept altogether. The book Practical Shakespeare Essays in Cultural Materialism was jointly edited by किसने edit किया था? Who was the person who had edited? Again, आपका आज homework जो मैं आपको दे रही हूँ इसी से ही based है. So the book Practical Shakespeare Essays in Cultural Materialism was jointly edited by which two people? Who are the two people who had actually jointly edited this particular part? Who had done it? कौन सा? What is the right answer to be here? So Alan Sinfield and Jonathan Dollimore, right? So Alan Sinfield and Jonathan Dollimore, they are the one who are writing political Shakespeare. आज का आपका जो homework भी है, वो इसी पे based है. आज का जो आपका homework आपने cover करना है, जो आपने complete करना है, it is actually on this only. Identify the work which has not been authored by the famous cultural critic Raymond Williams. इनमें से कौन सा वर्क रेमंड विलियम्स ने नहीं लिखा है? क्योंकि एक वर्क जो है वो रेमंड विलियम्स ने नहीं लिखा है बल्कि ब्लैकमोर ने लिखा है. और कौन से ब्लैकमोर ने लिखा है? ईपी सॉरी इट इज अ वर्क रिटन बाय ईपी थॉमसन. सो कौन से वर्क को ईपी थॉमसन ने लिखा है? ईपी थॉमसन is the person who's writing this particular work. Which is the work that E.P. Thompson is writing? Which is the work that E.P. Thompson is writing? Over here, what becomes very good? We've got the right answer. Dominator Rajneesh has given the right answer. That is absolutely the making of English working class 1963. This is by E.P. Thompson, the left-wing historian. So you are able to see कि बाकी सारे के सारे वर्क अगर आपको नहीं भी पता था मॉडर्न ट्रेजेडी इसने लिखा है कि नहीं कंट्री एंड सिटी कल्चर एंड सोसाइटी हमने बोला भी हुआ है और दोबारा से जो कल्चरल स्टडीज करेंगे एक बार देख लेंगे. Second language. What is the second language? The second language is what? What is the second language? Right? What is the second language? What do we mean by a second language? जो सेकेंड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज. एक सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है? द लैंग्वेज सेकेंड इन इम्पोर्टेंस, द लैंग्वेज यूज्ड बाय सेकेंड जनरेशन, एनी लैंग्वेज अदर देन लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग. कोई और भाषा. आपका L1 क्या होता है? आपका L1 होता है आपका मदर टंग. L2 होता है सेकेंड लैंग्वेज. दैट इज द लैंग्वेज दैट यू ट्राइंग टू अक्वायर. राइट, दैट इज द लैंग्वेज दैट यू ट्राइंग टू अक्वायर. अभी अभी हम लोगों ने नॉर्म चॉम्स्की भी करा था जो 9:30 पीएम पे लास्ट आई थिंक 2-3 दिन पहले जब लैंग्वेज पे हम लोग करे थे वी टॉक्ड अबाउट नॉर्म चॉम्स्की एंड वी सेड वो एलएडी के बारे में बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बोलते हैं जेनरेशनल ग्रामर और जेनरेटिव ग्रामर एज इट्स कॉल्ड. तो L1 L2 को acquire. So L1 is the language that you have and what is L2? What is the importance of L2 that you are able to see? L2 का जो example है that is any language that you are using besides your native language. Okay. When a learner's second language learning system seems to freeze or get stuck at some more or less deviant stage, that phenomena is called. ठीक है, आपको दूसरी लैंग्वेज में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है. जैसे फॉर इंस्टेंस इफ यू आर प्रॉब्ली लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज, आपको काउंटिंग आ गई, यू गॉट लाइक वाहिद इत्नैन सलासा दरबा खमसा और यू नो व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू लर्न इन द सेकंड लैंग्वेज, फिर उसके बाद आपको कुछ और नहीं आ रहा है. तो व्हाट हैज हैपेंड? ठीक है, आपने काउंटिंग सीख ली, आपने हेलो हाय सीख लिया उस लैंग्वेज में और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग देयर? वेरी गुड, क्वीन खान हैज गिवन द राइट आंसर. दिस कॉल्ड फॉसिलाइजेशन. ठीक है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस कॉल्ड फॉसिलाइजेशन. आपका स्लिंकर एंड लमेंडला, लमेंडला एंड स्लिंकर, लमेंडला एंड स्लिंकर आ रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टर्म कॉल्ड फॉसिलाइजेशन. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? फॉसिलाइजेशन कहा जाता है व्हेन यू आर एबल टू सी कि आप और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उससे अलावा आपको नहीं आ रहा है कुछ भी. इंटीग्रेटिव मोटिवेशन क्या होती है? व्हाट इज इंटीग्रेटिव मोटिवेशन? व्हाट डू वी मीन बाय इंटीग्रेटिव मोटिवेशन? What do we mean by integrative motivation? What is integrative motivation? Integrative motivation. There is a concept called inner locus of control and some things which are beyond your control. Monica है ना, just like आज पढ़ने का मन. She's like the केजरीवाल figure. Remember वो केजरीवाल और मोदी के ऊपर जोक बना था that केजरीवाल even if he is having an upset stomach he'll be like this is because of Modi ji, right? Monica is like that. He's like blurred hair. ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, हाँ.
So that's also good. We need such kind of people as well. Okay, what is the right answer? Absolutely right. So when we are talking about integrative motivation, जब आप अपने cultural enrichment के लिए या personal growth के लिए कोई language सीख रहे हैं, जैसे business language भी आजकल होता है, आपको business vocabulary बोलनी है. So while you learning that language, you're learning that language for personal growth, you're learning that language for cultural enrichment. तो उसको integrative motivation कहा जाता है. Okay, now quickly when we are talking about मैं ज़्यादा time आज नहीं लूँगी. I will not take a lot of time at all. Now when we are talking about when we are looking at book winning books, especially अगर आपका target next cycle है, तो आज से ही एक Booker Award winning book को आप cover कीजिए. What is the Booker Prize? The Booker Prize is an annual prize that is given to a work of art that is actually written in English. ठीक है? अब देखिए पहले ये कॉलोनीज को दिया जाता था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा acquired थी, but slowly and steadily now to any work that is written in English, this particular work, this particular price is actually extended. ये start कब हुआ था? ये start आपका 1969 से हुआ है. पहला विनर कौन है बुकर का? न्यूबाय इज द फर्स्ट प्राइज विनर. एंड कौन सा वर्क लिखा है इन्होंने? समथिंग टू आंसर फॉर, समथिंग टू आंसर फॉर. ठीक है. मैन बुकर प्राइज, मैन ग्रुप ने जब बुकर प्राइज को अक्वायर कर लिया था तो इट बिकेम मैन बुकर प्राइज, राइट. और आप देख पा रहे थे यान मार्टिन का टेल ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ पाई, इज अ कैनेडियन राइटर दैट वी आर एबल टू सी. ठीक है. तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है. आज हम लोग रिमेंबर रूट प्रवर झाबवाला पे 9:30 पीएम पे क्वेश्चंस कर रहे थे. तो हीट एंड डस्ट यू आर एबल टू सी. एक ऐसे सिर्फ दो वर्क्स ही शॉर्टलिस्ट हुए थे एंड हीट एंड डस्ट रिसीव दैट पर्टिकुलर प्राइज ऑल टुगेदर. जॉइंट बुकर भी मिला हुआ है. दोस आर आल्सो सर्टेन पॉइंटर्स दैट यू विल टॉक अबाउट. अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको बुकर दो बार मिला है? हिलरी मैंटल को बुकर दो बार मिला है. शी इज गॉट द बुकर फॉर bring up the body as well as Woolford. So when we are talking about, she's basically written about the Tudor dynasty. तो इन्होंने अभी we'll talk about it also. इन्होंने Tudor dynasty के ऊपर जो books लिखी हैं, that is when Bring Up the Bodies and Woolford. She's written, these are two parts of one trilogy. And इन दोनों को Booker Prize मिला है. और ये किसके बारे में बोल रहा है? ये Tudor dynasty के बारे में बोल रहा है. How Anne Boleyn, how Anne Boleyn gets married to Henry the Eighth, and how Henry the Eighth वो पूरा का पूरा क्रैमर आ रहे हैं. आपका ओलिवर क्रॉमवेल के ग्रेट ग्रैंडफादर थॉमस क्रॉमवेल भी प्रेजेंट किए गए हैं. So that is what you're able to see. James Coetzee is getting it for twice. He's getting once for Disgrace and then he's getting it for Life and Times of Michael K. K standing for Franz Kafka. So you're able to see that Coetzee, who's now residing in Australia, he is a South African writer who's writing and he's got the Booker Prize twice. Peter Carey, the Australian writer, इनको दो बार बुकर प्राइज मिल रहा है, ऑस्कर एंड ल्यूसेंडा के लिए एंड ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैलीगैन के लिए. इसके साथ साथ मार्गरेट एटवुड को टेस्टमेंट्स और ब्लाइंड असैसिन दोनों के लिए बुकर प्राइज मिला हुआ.
Hello. 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 Now I think you're able to hear me. Perfect, perfect, perfect. Okay, I don't know कौन से point पे आवाज चली गई है. I don't know कौन से point पे आवाज चली गई है. But I hope कि now you're able to hear, right? Now you're able to hear. Perfect. Hello. Hello. Can you hear me now? Okay, I think now you're able to hear me, right? Okay, perfect. I'm just repeating the pointers. I connected it to the laptop audio only now. I'm just repeating the pointers. मुझे ये नहीं पता कि कहाँ पे what point you were not able to hear me. Booker Award जो है, what are we talking about? When was it started? 1969. PNUB was the person who got it first. कितने लोगों को Booker दो बार मिला है? Hilary Mantel, J.M. Coetzee, Peter Carey, and Margaret Atwood. This is what I was telling you about. Hilary Mantel को जो Booker Prize मिला है, that is for Wolf Hall and Bring Up the Bodies, जो ट्यूडर पीरियड के बारे में बोल रहा है. जेएम कोची को बुकर प्राइज किसके लिए मिला है? ही इज गॉट द बुकर प्राइज फॉर डिसग्रेस एंड लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के. पीटर कैरी को बुकर प्राइज मिला है टू कंपल्सिव गैम्बलर्स, ऑस्कर एंड ल्यूसेंडा एंड ट्रू हिस्ट्री ऑफ केली गैंग के लिए, नेड केली के ऊपर जो है. एंड टेस्टामेंट्स एज वेल एज ब्लाइंड असैसिन की वजह से मार्गरेट एटवुड हैज गॉट इट. ठीक है. साइज कोई फर्क नहीं पड़ता है. छोटी से छोटी बुक लाइक ऑफशोर बाय पेनेलोपी फिट्जरेल्ड to a very big work like Luminaries by Eleanor Catton, who is also one of the youngest people to get the Booker. So there is no size on the price. Man Booker Dozen का जो concept है, बहुत सारी books जो हैं, they were getting yeah, they were getting long listed. So what basically happened is that people decided इतने सारी books को long list करने की जगह it is better कि आप एक cap बना दें ताकि we are able to select the price. अब ये जो है ये joint winners of Booker हैं, Godimer and Stanley Middleton and Barry Unsworth and Ondaatje. और इसके बाद इन्होंने कहा ये तो हमारे पूरे status को dilute कर देगा. So what did they decide? They decided only one book will be selected. Now, Booker in the family, you are able to see that Anita Desai has been shortlisted for the Booker, just like Rohinton Mistry and David Malouf. नेट के एग्जामिनेशन से कौन कौन लोग हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं? रोहिंटन मिस्त्री, द इंडियन कैनेडियन राइटर, ऑल्सो इज गेटिंग शॉर्टलिस्टेड. David Malouf, an imaginary life, writing, remembering Baby Ron. So you're able to see that, Malouf is also a person ये नेट के एग्जामिनेशन से important है, but ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं, इनको प्राइस नहीं मिला है. But Anita Desai को प्राइस नहीं मिला है, but daughter Kiran Desai, she got it for inheritance of loss. The inheritance of loss जो इन्होंने लिखा था उसके लिए she got the Booker Prize. Okay, Martin Amis has been shortlisted and longlisted for Booker.
लेकिन his father Kingsley Amis को बुकर प्राइज मिला हुआ है. तो बुकर in the family also you are able to see over here. Movie adaptations, Thomas Nelly की Schindler's Ark has become Schindler's List by Steven Spielberg. ये किसके बारे में है? This was Thomas Nelly. He's an Australian writer. He was told by a person that you please write the story of Schindler. Oscar Schindler is the story of a man who is not trustworthy by the wife. हम लोगों ने we've also discussed it in classroom class. He is not at all somebody, he's not at all somebody who's trustworthy, but he's the one who saves the lives of Jews. So it's not that everybody was trying to kill the Jews. There were also people who were trying to save the lives of Jews. ये भी आप देख पा रहे थे, ठीक है? Booker for the first time, Carrie Hulme, Arundhati Roy, God of Small Things, very important work, right? So Arundhati Roy की God of Small Things, as well as Carrie Hulme, The Bone People, इनको अपनी पहली नॉवल के लिए बुकर प्राइज मिल गया था, राइट? इवन अरविंद अडिगा वाज एक्चुअली अ यंग राइटर गेटिंग इट. अच्छा, लिंकन इन द बार्डो बाय जॉर्ज सॉन्डर्स, बहुत ही फेमस वर्क है. ये बता रहा है कि कैसे एब्राहम लिंकन का जो सन की डेथ हो गई थी, विलियम विली वॉलेस लिंकन, प्रेसिडेंट, हम लोग सोचते हैं कि दोस पीपल आर अबव, बट दे आल्सो हैव देयर पर्सनल ग्रीफ. रिमेंबर दैट मोमेंट वेयर they talk about prime ministers, mothers passing away, or so ये सारे bereavements, or that very touching account during COVID's time, how Yogi Adityanath could not go to the bereavement of one of his parents death, right? तो आप ये देख पाते हो तो very touching scene कि हम लोगों को लगता है हम लोग own करते हैं इनको, but इनकी भी एक personal life है. Okay, and the novel is taking place a single evening. It is set in the Bardo, right? Bardo is this place between life and death. बहुत ही beautifully written है. आपके पास अगर time होगा तो जॉर्ज सॉन्डर्स को जरूर पढ़िएगा. ये ना आपका जो होता है ना courses on language and writing, इनमें ये पढ़ाया जाता है. Lincoln in the Bardo. Milkman by Anna Burns, again a very important work. 18-year-old girl की story बताता है. She's in a relationship with an older married man. You can compare it with Lolita as well. When you're looking at Vladimir Nabokov, वो कैसे comparison आप कर सकते हैं? Narrow Road to the Deep North, again by an Australian writer, Richard Flanagan. Dorigo Evans की ये story बताता है, and it's telling you about the setting up of the railway track that is there, and the title is actually inspired by haiku poetry. Haiku poetry से the title is actually inspired. ठीक है, तो प्लीज याद रखना इन सारी चीजों को. एटलीस्ट यू कैन रिमेंबर. व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज यू कैन रिमेंबर these works that we are highlighting, right? These works that we are trying to highlight all together. At least you can keep that in mind. All right. White Tiger by Arvind Adiga. Arvind Adiga is trying to tell you about a Machiavellian character, Balram Halwai. जो making of the Indian so-called people है, business people है, ये आता है यहाँ पर. You can even watch the movie. There is a movie on White Tiger that you are able to see, and the entire story of Balram Halwai's character. And ये बोला भी जाता है that this work is representing the Indian, the colossal Indian underclass. ये कैसे अपने जहाँ पे बैंगलोर में काम करता है, he kills his master, goes to China, creates a fortune for himself altogether. That is what you're able to see. Inheritance of Loss, again by Kiran Desai. Like I said, she got this particular prize. यहाँ पर भी you are able to see कि कैसे at the backdrop of a political event ये work लिखा गया है. अच्छा, Hullabaloo in the Guava Orchard was the first important work that Kiran Desai had written, और उसके बाद we are able to see that this particular work comes in. Inheritance of Loss to आ रहा है. It is written in the backdrop of the Gorkhaland movement. जो Gorkhaland movement है, characters important है, Biju Sai, Jamnabai Patel, ये आपको याद रखना है. Life of Pi, story of Pisan Patel, the story of survival, how he survives for over 227 days that he's surviving, right? So you are able to see that how the tale of survival. No, and ये भी movie है, you can watch that movie. इसका clip भी Instagram reel पे बहुत popular है. When Pisan Patel's father is telling you to select a religion, but clearly आपको पता चलता है that the biggest religion is survival, right? The biggest religion that will save you is going to be survival altogether. That is what you are able to see.
Very nice, Kasturi. Yes, Oscar Skindler. Very good, Dominator Rajneesh. 575 haiku. ये जो arrangements हैं, that is what you're able to remember. True history of Kelly Gang. Peter Carey, the Australian writer that we are talking about. अच्छा, blind assassin important है, और यही मैं आपको कहती हूँ important works के लिए. I'll just hide myself so that you're able to see this. Important works के लिए please create mind maps. ठीक है? How it is telling you the story of Iris Chase Griffin, the narrator, राइट, एंड लॉरा चेज जो सिस्टर है, लॉरा की बुक ही ब्लाइंड assassin है. तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स, यू नो, ग्रिफिन, विनिफ्रेड प्रायर, एलेक्स थॉमस, रिनी, माइथ्रा स्ट्रगर्स, ये सब, यू नो, you can, for important works you have to make mind maps, right? For important works, what do you have to do? For important works you have to make mind maps all together and get it done. ठीक है? So please remember, novel within a novel. Blind Assassin is a novel that is being made all together. That is what you are able to largely see. So again, when we are looking at Booker prices, when we are talking about Booker prices, इसको अच्छी तरह से आप cover कीजिए. I leave you right now. Right, I will leave you right now, and there are a couple of things, right? There are a couple of things that I want you to do over the weekend. सबसे पहले तो now that we have a date to everything, next week onwards आपकी marathon revision होगी, and like I told you, on this platform by YouTube sessions itself we will be able to revise over 1500 concepts. ठीक है? Approximately we'll target to cover all of that, 1000 to 1500 concepts. आपका जो बैंड बुक्स का होमवर्क अभी मंडे से फ्राइडे 10:30 PM जब हम मिले हैं, 5 लेक्चर्स हो गए, तो मैंने आपको फर्स्ट में होमवर्क दिया था, फिर पीटर कैरी का होमवर्क दिया था. ये मैंने आज क्लासरूम स्टूडेंट्स को भी बोला है. पीटर कैरी में से आई वांट यू टू एटलीस्ट गो ओवर न्यू हिस्टोरिसिज्म एंड कल्चरल मटेरियलिज्म एंड नैरेटोलॉजी. ये प्लीज आप जाइएगा, सारा आप स्टूडेंट को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. मैंने इंग्लिश लिटरेचर हसलर्स टेलीग्राम चैनल पे ये डाल भी दिया है, तो सारा आप स्टूडेंट को एक बार पूरी तरह से आप रिवाइज कर लीजिएगा. और मॉडर्निज्म, कल मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, मॉडर्निज्म के जो इज्म्स है उनको बनाइएगा. नेक्स्ट क्लास में हम पहले इनसे ये होमवर्क के अपडेट से स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल बी गोइंग फर्दर. ठीक है? देन वी विल बी गोइंग फर्दर. इन केस अगर कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो. कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा. कोई सपोर्ट चाहिए, कोई भी टॉपिक जो आपको एग्जाम से पहले कवर करना है, तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज जस्ट मेक श्योर that you know that in the comment section you're at least letting me know, so that I also have clarity कि आपको कौन से टॉपिक पे हेल्प चाहिए. अदरवाइज नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स 10:30 प्लीज ये टाइम फिक्स कर लीजिएगा. नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स डेली 10:30 मंडे टू फ्राइडे, तो ऑब्वियसली 10:30 PM we will be practicing these questions. Okay, so your mock nets are going to be there. All right, thank you so much. Oh, so sweet, Devanshi. Okay, thank you so much everyone for joining. कल और परसों दोनों दिन, alright, even though I'm going to see the match, but anyway, कल और परसों दोनों दिन आपकी क्लासरूम क्लास है. So कल आपकी 8 o'clock क्लासरूम क्लास है, 9:30 PM क्लासरूम क्लास है. परसों आपकी 11 o'clock क्लासरूम क्लास है, and 1 o'clock क्लासरूम क्लास है. तो स्कोर बूस्टर बैच की क्लासेस नहीं खत्म हो रही है. ठीक है? मंडे को I'll meet you on YouTube. Thank you Zamar, thank you Ravi, thank you Aziz, thank you Future Dreams, Anjali, good night Dominator, good night Shweta Padma, good night Manisha. जी मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल दूंगी. थैंक यू क्वीन खान, थैंक यू सुप्रतम. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो. ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू. Thanks everyone. Study hard over the weekend, and I'll catch up with all of you on Monday. Take care. Bye.